Hello everyone. In today's class, we are going to start with practical number 6, that is RIP version 1, routing across the three routers. In this practical, we are supposed to have three routers and each router will be connected to at least three PCs, or we can connect more than three PCs also. Okay, we have to implement RIP version 1 routing between the routers, and we have to verify the connectivity using the ping and routing table. Okay, so let's start. Let's first of all see what is RIP. RIP is Routing Information Protocol version V1. It is one of the oldest and simplest routing protocol which is used in computer network. It helps routers to share information so that they can forward the packet to the correct destination. Okay, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है जिसके थ्रू आपका जो पैकेट है वो नेटवर्क में एक राउटर से दूसरे राउटर में वो ट्रांसफर होने वाला है. इट विल बी ट्रैवलिंग from one router to another router. Okay, so there are various version of RIP. The simplest one is V1. It is a distance vector routing protocol that is used to hope count. Okay, means एक router से दूसरे router पे hoping करना और jumping करना. Okay, as a metric and works using classful routing. Okay, classful routing means it required IP addresses for routing. Okay, for traveling. Now, what are the advantages? It is very easy to configure and it work well in small network, low CPU usage. Whereas the limitation, no subnet mask information is present. It is not so secure and a slow convergence, suitable only for very small network, and it is allowing only 15 hops. Okay, now let's start with the practical. See, this is the diagram which, or you can say our network which we have to make. Here we have taken, I have taken three routers, and you can add 3 PC. For simplicity, I've added 2 PC. Okay, एक और यहाँ से आप add कर सकते हो. कुछ उसमें इतना ये नहीं है. See, this the first router I've created a network. The network IP address is 10.10.10.10.1. Okay, this is the IP address of this port. Whereas the switch is having two system. So this is 10.1. The PC will be 10.2, 10.3. Okay, and for this router, the network is this 20.20.20.1, and this will be 20.20.20.2 and 3. Likewise, this is 30.30.30.1, and this side 2 and 3. Okay, whereas this port is 40.40.1, whereas this side port is 40.40.2. इस यहाँ पर आप हमने दिया है 50.50.50.1, this side 50.50.50.2. Okay, so let's draw the connectivity first of all. So I have already opened the Cisco Packet Tracer. What I will do, I will first take a router. Okay, so for this I'm taking a simple router, which is PT router. You can see here PT router. So let's start. I'm pressing the control key and then I'm picking the router. Okay, this will allow me to select multiple router at a time. Okay, कंट्रोल प्रेस करके आप ये प्रेस करेंगे तो ये आप मल्टीपल एट अ टाइम कर लेंगे, अदरवाइज एक एक बार आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा. Okay, then I'll take three switch. I'm taking simple, again I'm pressing the control, so I'm taking three switches. Then मैं यहाँ system में जा रही हूँ. I'm taking two systems. For practical, add three systems. Okay, then in the automatic wiring section, I'm taking a automatic wires. This we have to add like this from top to bottom. And the three routers will be also connected with each other. So I'm putting like this. Okay, now what you can do, you can arrange your network. Okay, I'll give the IP. So this port will have the IP address as 10.10.10.1.
whereas this will be 20.20.20.1. This side it will be 30.30.30.1. Okay, now इस system का IP address I'll be mentioning 10.10.10.2. This side will be 10.10.10.3. Okay, now for this PC, ये इस network में है, so I will mention this as 20.20.20.2. This is 20.20.20.3. and यहाँ पर इस system में this is 30.30.30.2. This is 30.30.30.3. ओके, अब यहाँ पे हमको क्या देना है? दिस इज अवर 40.40 पॉइंट सॉरी 40.40.1 and this side port will be 40.40.40.2. ऐसे आप आईपी एड्रेस लिख लेंगे तो फिर मिस्टेक्स नहीं होती है. दिस इज 50.50.50.1 and this side I'm mentioning as 50.50.50.2. ओके, सो ये इतना आईपी एड्रेस आपको असाइन करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द पुटिंग द कॉन्फ़िगरेशन पार्ट. ओके, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने माउस के कर्सर को आप ये वायर के वहां पे लेके जाइए. Simply just like I have mentioned here. Now you can see it is showing us the FA00 port and यहाँ पर भी आप वायर के ऊपर exactly लेके जाइए. यहाँ पे दिखाई दे रहा है serial port 20. Okay, that is the port number in which we have to give the IP. Okay, so यहाँ नीचे ये वाला जो हमारा नेटवर्क है उसका जो IP एड्रेस है वो 00 है. So we'll turn it on and we'll give the IP address which is 10.10.10.1. Okay, I'll take the subnet mask also. And then इस side में क्या है? Serial 20 है. Turn it on. Now what is the IP configuration for that? We have selected 40.40.40.1. Correct. Then turn it on. इसको मैं copy कर लेती हूँ and then close it. Now for this यहाँ पर you can see this is SE20 and यहाँ पर this is FA00 whereas this is SE03. Okay, config में जाएंगे. This is turn it on first of all. This is 20.20.20.1. Now this is turn it on. This was 40.2. Correct. Then 30 जो है इसको क्या है 50 point है हमारा. Correct. This is 50.50.50.1. Turn it on. Done. Now for this router config, first of all यहाँ पर this is 30.30.30.1. Then this side it would be 20. Okay, so we'll give this your IP address which is 50.50.50.2. Okay, so ये हमारा जो पोर्ट नंबर है ये हमने असाइन कर दिया. इंटरफेसेस होता है तो उसको हमने असाइन कर दिया. जैसे कि यहाँ पे इंटरफेस क्या था, दिस वाज FA00. यहाँ पे इंटरफेस था सीरियल 20. ओके, तो ऐसे यहाँ पे इस राउटर में 3 इंटरफेसेस थे वेरएस यहाँ पे 2 ही इंटरफेस है. तो हर एक इंटरफेसेस पे आपको पोर्ट पे आपको वहाँ पे आईपी एड्रेस मेंशन करना होता है, अदरवाइज वो पैकेट ट्रैवल नहीं करेगा. So for this network, my default gateway will be 10.10.10.1. For this network, my default gateway will be 20.20.1. And ये जो थर्ड हमारा नेटवर्क है इसका है 30.30.1. सो आईपी एड्रेस यहाँ पे देना होगा हमको. डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम का आईपी होगा 10.10.10.2. देन उसका डिफॉल्ट गेटवे होगा विच इज 10.1. IP address of this port of interface of router. ओके, इसको क्लोज करते हैं. ये हो गया. देन यहाँ पर डेस्कटॉप IP configuration, the IP address for this is 10.3 and the default gateway is 10.1. ओके, देन अब यहाँ पर इस ये वाले सिस्टम के लिए क्या होगा, हमारे पास है वी हैव 20.20.20.2. करेक्ट. इसको कॉपी करेंगे यहाँ पर
1 लिख देंगे. The default gateway for this network is IP address of this side of interface, correct, which is 20.20.1. Now for this system, we'll again give the IP address. This is 20.3, correct. Then उसका default gateway आप enter करिए, which is 20.20.1. Okay, ये हो गया. इसको close करिए. For this system, again we'll give the IP address which is 30.30.30.2. इसको copy करते हैं यहाँ पर 1. Okay, ये हो गया. Then यहाँ पर desktop IP configuration, this is 30.3, and यहाँ पर default gateway which is 30.1. Okay, now close it. Done. Okay, so we have configured the network. Now the last part. Now we are going to apply the RIP. RIP कैसे apply करना है? Simply router पे click करेंगे, यहाँ पे RIP. ये बहुत ही आसान है. आपने जितने भी नेटवर्क क्रिएट किए आपको सिंपली यहाँ पे एंटर कर देना है. ओके, सो द फर्स्ट नेटवर्क इज 10 के रेंज में है, सो विल गिव 10.0.0.0. ओके, केवल आपको फर्स्ट जो डोमेन होता है वही ऐड करना होता है, बाकी आप सब 00 ऐड कर देंगे. देन अगेन 20.0.0.0 add it. Likewise we'll give 30.0.0.0. सारे नेटवर्क को आपको वहाँ पे ऐड करना होगा, अदरवाइज आपका पैकेट उस राउटर से पास नहीं होगा, आगे नहीं जाएगा. सो विल गिव 50.0.0. add it. Done. Now for this router again RIP 10.0.0.0. it. Now next 20.0.0.0. add it. Then again 30.0.0.0. add it. Then 40. Then 50. Okay. Then lastly for this router again we'll do the RIP. We'll add. Cisco में ये बहुत आसान है RIP apply करना. Okay, we have to simply give the network. जितने भी आपने नेटवर्क क्रिएट किए सारा आपने उसका नेटवर्क का IP एड्रेस ऐड कर दिया. 30 के बाद then we have 40, then we have 50. Okay, add it. Done. Okay, क्या करना है? सिंपली पिंग करेंगे. यहाँ इस सिस्टम से हम ये वाले नेटवर्क में जाएंगे, ये वाले सिस्टम को पिंग करते हैं. We'll give ping. This is 30.30.30. This is 3, correct? So we'll enter. ओके, फर्स्ट टाइम वो टाइम आउट ही दिखाएगा आपको, बाद में आपको रिप्लाई आ रहा है, मीन्स इट इज कनेक्टेड. ओके, लेट्स ट्राई फ्रॉम दिस सिस्टम. यहाँ से हम वहाँ पे ट्राई करते हैं. आई ट्राई फॉर पिंग से 10.10.10.3. ओके, सो नाउ यू कैन सी थोड़ा सा टाइम लेता है ये. फर्स्ट टाइम टाइम आउट आएगा एंड देन आपको रिप्लाई आने लगेगी. ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव गॉट द रिप्लाई. ओके, तो ये ऐसे काम करता है, मीन्स वी हैव सक्सेसफुली अप्लाइड द RIP प्रोटोकॉल यूजिंग विच द 3 नेटवर्क्स आर कनेक्टेड. ओके, एंड दिस इज, रिमेंबर RIP इज वर्जन 1 हमने अप्लाई किया है, विच इज वेरी सिंपल एंड इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल नेटवर्क. ओके, so this was your practical number 6. Please complete it. Okay, see you in the next video. Bye.